is our do while loop. The do while loop construct place the condition at the end of the loop which make the statement to be executed at least once if your condition is false. The difference between while सर आपन वॉइस अप डाउन होची सर आपन वॉइस अप डाउन होची ଆଉ କାହାକୁ ସୁଚି ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ सर अपडाउन वीडियो मोर सेमती होची ଅପଡାଉନ୍ ହଉଛି आगे सर हेलो सुबची एबे ठीक ठाक हेलो लक्ष्मीकांत सुबची हां सर आसुची क्लियर ठीक अछि आज्ञा कि कहला हेलो हेलो देखो do while loop construct place the condition at the end of the loop which make the statement to be execute at least one. The difference between while loop and do while loop is what? while loop रे कोन हबो जदि मोर कंडीशन फॉल्स थिवो तले कोनोसी स्टेटमेंट मोर एग्जीक्यूट हबो किंतु do while loop रे कोन हबो जदि मोर कंडीशन फॉल्स थिवो ताले एटलीस्ट वन टाइम द स्टेटमेंट टा एग्जीक्यूट हबो माने थरे चाहले मो स्टेटमेंट टा एग्जीक्यूट हबो एटा होची do while loop रा काम बुझला सर कंडीशन फॉल्स थिले भी हो कोन कहला सर कंडीशन फॉल्स थिले भी सेटा इंक्रीमेंट हो सेटा माने गोटे टाइम पे हां कंडीशन फॉल्स हेले एटलीस्ट वन टाइम माने थरे स्टेटमेंट टा मोर एग्जीक्यूट हबो बुझला आज्ञा हम शो करछि देखिबो
do while ର ଗୋଟେ program ନବ। Okay, so this program is displayed from 10 to 20. The first consider int a equals to 10, then मोर looping भितर को आसला 10 print करिवो एठी, तापर 10 plus 1 11, 11 हैला, तापर condition then check हबो, 11 is less than equals to 20, condition is true हैला, देखैला, पुनी एठी आसला 11 देखैला पर 11 plus 1 12, 12 is less than equals to 20, ताले मते एठी 12 देखैला, 12 देखला पर 12 plus 1 13, 13 is less than equals to 20, तारे एठी मते 13 प्रिंट कर, ए बळे मते 20 जे एटा प्रिंट करिवो, ए प्रोग्राम ता एग्जीक्यूट करूची। D colon enter Java C do while dot Java. Then Java do while. That is execute the statement. Now here I initialize another value. Hundred. When I initialize the 100 value, now it is display the 100. 100 plus 1 is 101. 101 is less than equals to 20. The condition is false. So when it is false, now check. Okay, so at least one time the statement is executed. 100, 100 print color, 100 plus 1, 101, 101 is less than 20, condition is false. माने मोटे value देले सेटा false value, किंतु at least one time मोर statement टा एटी execute है, बुझेला? किंतु এই জিনিসটা যেতර মো while loop পরে দেখিবি, যদি মো এটি while loop পরে 100 পাস করছি, then what is the result?
Java C while demo okay, so there is no value, it is displayed. हमारे condition टा कौन है false है int a equals to 100 100 is less than equals to 20 the condition is false here the condition is false है तो मते केवल मैंने एठी किछि वैल्यू देखेला किंतु जरा मु डू व्हाइल लूप रे सेम प्रोग्राम करले मते एटलीस्ट वन टाइम मो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो ओके 100 the 100 print color 100 plus 1 101 is false है बुझिला गोटे वैल्यू देखेला तापर false এটা হচ্ছে আমরা ডু হোয়াইল লুপ টা So looping is over. Now we start with array. सर लूप रा प्रॉब्लम ना है नहीं की बहुत प्रॉब्लम अछि आज क्या हो आगे सर ई देबी टैक्स भी तुमको आज सरला ना लूपिंग रो अछि एचसीएफ एलसीएम माने जो गसा को लसा को जो जानती हो सेटा भारी हो आगे तापर फॉर लूप रो पैटर्न रहियो पैटर्न प्रिंटिंग मतलब पैटर्न प्रिंटिंग भी रहियो बहुत प्रोग्राम ए 20 25 टा वाले प्रोग्राम आ रहियो ग्राउंड मो टैक्स दे देबे तमे करिवो यदि न होला तार सॉल्यूशन भी मिले बुझिला आगे ता भीतर तमे देखियो जो जो बड़ा डाउट होबो सेटा पचारिबो गोटे गोटे करके सेटा क्लियर कर देबो सब जगह प्रोग्राम हमें डिस्कस करले अपन 25 50 टा प्रोग्राम में कर nested for loop ता देखि दो nesting for loop within the another for loop से प्रोग्राम का
Next is nested for loop. Okay. For INTI, nested for loop work is what? In a for loop, you have to mention another loop. In a for loop, another for loop is used. That is called the nested looping. So for INTI equals to 1, 1 less than equals to 5. Condition is true, 1 is less than equals to 5. Then it is coming to the inner loop. In inner loop, j equals to 1, 1 is less than equals to I. I ର value କେତେ ଅଛି 1 ଅଛି ତ ଏଠି j ର value 1 ରହିଲା ତ 1 equals to 1 ହେଲା ତ ମତେ ଏଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ କଣ ନା 1 ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା ମୁଁ ଏଠି ଆଉଟପୁଟ ବି ଦେଖେଇ ଦଉଛି କଣ ରହିବ ଏଠି ମୋର 1 ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା ତାପରେ କଣ ହବ j ର value increment ହେଲା 1 ଟା ହେଇଗଲା 2 ତ 2 is less than equals to 1 I ର value 1 ଅଛି ତ ମୋର कंडीशन ଟା false ହେଲା false ହେଲା ପରେ ତାପରେ ସେ a ଲାଇନ କୁ ଆସିବ ए लाइन अर्थ कोन ना सिस्टम डॉट प्रिंट आउट डॉट प्रिंटएलएन ये मूव करिवो कर्सर को मूव करिवो नेक्स्ट लाइन कारण हमें एठी प्रिंट मेथड यूज करथिले प्रिंट मेथड माने कर्सर टा को सेम लाइन में रखिवो प्रिंटएलएन लिखले कर्सर टा को नेक्स्ट लाइन को आनला तापर हमें कोन करिवो एठी ना आईएनटी आई वैल्यू टा इंक्रीमेंट हला 1 अछि 1 टा इंक्रीमेंट हला 2 को 2 less than equals to 5 condition is true एठी 2 टा less than 5 होला तापर इनर लूप को आसिला इनर लूप रे कोन होला ना j रो वैल्यू होला 1 1 is less than equals to 2 I रो वैल्यू 2 अछि तो 1 is less than equals to 2 yes 1 is less than 2 then एठी प्रिंट कला I रो वैल्यू केते अछि 2 अछि तो 2 प्रिंट कला पुनी j रो वैल्यू टा इंक्रीमेंट होला j रो वैल्यू 1 अछि 1 टा इंक्रीमेंट होला 2 2 is less than 2 no 2 is not less than 2 2 is equals to 2 yes 2 is equals to 2 then system dot out dot println to print kala 2 तो मते एठी 2 प्रिंट कला ला जेंति तापरे j रो वैल्यू इंक्रीमेंट हला 2 रु 3 को इंक्रीमेंट हला 3 is less than 2 condition is false when condition is 3 is less than 2 condition is false now when condition is false then eta cursor ta एठी आसीला मतलब नेक्स्ट लाइन को गलो नेक्स्ट लाइन पर पुनी कोन आसीला ना I रो वैल्यू इंक्रीमेंट हला 3 ओके तो when I रो वैल्यू ता 3 को जतला इंक्रीमेंट करूची 3 is less than equals to 5 yes 3 is less than equals to 5 now एठी 3 टा लेस देन हला 5 संगरे j is equals to 1 1 is less than equals to 3 condition is true एक ता 3 टा लेस हला तबे I रो वैल्यू एठी प्रिंट करिवो I रो वैल्यू हला 3 then j वैल्यू 1 थिला 1 टा इंक्रीमेंट हला 2 को 2 is less than equals to 3 yes condition is true 2 is less than 3 then एठी I टा प्रिंट कला I टा प्रिंट करिवो एठी 3 प्रिंट कला then j value increment la 3 3 is equals to 3 yes condition is true 3 is equals to 3 then it is I ro value print kala 3 tapare j ro value increment la 4 4 is less than equals to 3 5 condition false hela यदि condition false hela ताले cursor टा मोर कोन हबो ना एठी system.out.println जोटा लिखा हिची cursor टा next line को आसीबो तापरे I रो वैल्यू इंक्रीमेंट हला 4
4 is less than 5. Condition is true. 4 is less than 5. Then inner loop को ଆସିଲା ଏବେ j equals to 1. 1 is less than equals to 4. Condition is true. Yes, 1 is less than. तो এটা प्रिंट कला कौन एटी 4 प्रिंट कला तापरे j ର value पुणी इंक्रीमेंट हैला j ର value इंक्रीमेंट हैला 2. 2 is less than equals to 4. Condition is true. 2 is less than equals to 4. Then मते एटी 4 प्रिंट कला. Then j ର value increment ହେଲା 3. 3 is less than equals to 4. Condition is true. Then मोर print कला I ର value print कला. Then j is increment to 4. 4 is less than equals to 4. Condition is true. Then it is printing you 4. Then j ର value increment ହେଲା 5. 5 is less than or equals to 4. Condition is false. Then outer loop को गला एठी मोर देखेला कोन ना system.out.println जे कर्सर को नेक्स्ट लाइन को आसेला पुणी j ର value increment ହେଲା केते I ର value increment ହେଲା 5. 5 is equals to 5. Then inner loop को आसेला inner loop रे एठी प्रिंट करियो 5 पांचटा 5 पांचटा 5 पांचटा 5 प्रिंट करियो पांचटा 5 एठी 5 रहला then 5 तापरे एठी j ର value जतरा increment of 6 6 is less than 5 no condition is false. Then एठी I ର value increment of 6 6 is less than equals to 5 condition is false ହେଲା false ହେଲା पूर्वरो मते एई पैटर्न नो वैल्यू का से शो कर दे एटा हला हमर नेस्टेड फॉर लूप एठी जदी I जगह हमें j प्रिंट करबा एठी 1 2 आसीबो एठी 1 2 3 एई जगह हमें जदी j प्रिंट करबा सपोज in place of I if I print j okay if I in place of I if I print j then result is something different. It is 1 1 2 then 1 2 3 1 2 3 4 then 1 2 3 4 5. Okay, so now first I run this program, then I will give one output by changing the value. Java C Java okay, so it is printing you 1 2 2 3 3 then triple 4 4 then 5 5. Then in place of I if I write here j now check what is the output. Okay, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5. It is a one output. If I write here j in place of j if I write here star it is printing you the star structure.
बुझेला नेक्स्ट प्रोग्राम next day I go for array. Manipulating the array element. Okay, so what is an array? One scenario is present. A programmer need to store 100 different words that will be used in a game. So for a gaming application, you have to store the 100 value, 100 words that you can store. So therefore, to store this value, the programmer needs to declare the 100 variable. Okay, for storing 100 data, 100 variable is required. Then it is very difficult task to maintain 100 variable at a time. So that instead of writing the 100 variable and storing the value, we have to define a single variable. Okay. अर्थ है कौन ना ये जो ये प्रोग्राम रे हमें कौन करिबा ना द 100 टा स्टोर करिबा 100 टा वेरिएबल तो दीटा नंबर पे मु दीटा वेरिएबल लेली तापर रिजल्ट शो करिया पे आ गोटे वेरिएबल लेली माने टोटली मु तीनटा वेरिएबल लेली तो सेमती जेतेबे मते 100 टा डाटा स्टोर करिवार अछि मते 100 टा वेरिएबल डिक्लेयर करिया पड़ी तो 100 टा वेरिएबल को मेंटेन करिवा it is very difficult for anyone. So for that reason, instead of defining 100 variable, we define a single variable. गोटे variable हमें define करिवा ता भीतर हमें सब value store करिवा. Okay, it's just like what तुमर घर अछि घरे कोन होउची ना समस्तनकर गोटे गोटे रूम रहउची and that room is present in under a one roof. गोटे छात तले समस्तनकर रूम रो एमती अछि कि तम रूम गोटे जगह रे बाबांग रूम आ गोटे जगह रे डिफरेंट डिफरेंट छात रहउनी तो ए दुकान नै जो तो ए टाइप रो प्रॉब्लम पई कोन हुए ना हम एमती डिफरेंट डिफरेंट जदी छात करबा तले हमको प्रत्येक घर पय मेंटेनेंस का अधिक हमको पड़े से छात पय अलगा ए छात पय अलगा तो एठी हम कोन करे गोटे छात पकई देले ता भीतर हम पार्टीशन करके घर array is just like that हमें इंडिविजुअली 100 टा डाटा को स्टोर करिया पई हमको 100 टा वेरिएबल डिक्लेयर करिवा रो दरकार नै हमें गोटे वेरिएबल डिफाइन करिवा ता भीतरे हमें 100 टा वैल्यू स्टोर करिवा ओके बट दैट वैल्यू इज ऑफ सेम टाइप माने हमें जतले गोटे घर करूचे गोटे छात पडुची जो रूम रहिला से रूम होची हम फैमिली मेंबर को हमें रही पड़े हम फैमिली मेंबर रही पड़े इट डजंट मीन आउटसाइड लोग के रही आरे से कहूची जदी हमें सेम डाटा टाइप रो वैल्यू स्टोर करिवा गोटे जगह रे तो हमको 100 टा वेरिएबल डिफाइन करिवा दरकार नै तो हमें गोटे एमिति मेमोरी डिफाइन करिवा जोतरे कि हमें 100 टा वैल्यू स्टोर करिवा किंतु से माने सेम डाटा टाइप रो हितवा दरकार जदी नंबर अछि नंबर हितवा दरकार स्ट्रिंग अछि स्ट्रिंग हेतिवा दरकार कैरेक्टर जदी अछि कैरेक्टर हेतिवा सेटा कहजिवो array however it is difficult to keep track 100 variable in a program which makes the program code long and complex
Therefore, in such a situation, a programmer needs to declare a variable that can store 100 words. So this can be achieved by declaring an array variable. So what is that array? Now, array is a collection of elements of a single data type that store in a adjacent memory location. It is a memory location jadare ame single data type ro value store kariba, and that is stored in a adjacent memory location. Adjacent memory location means pakha pakhi, jente am room guda ko सब जगह laga lagi hi ki rahite. So that is a adjacent mane pakha pakhi ki rahite. The array is a collection of elements of a single data type. माने जदि मो नंबर रा वैल्यू स्टोर करिवि त नंबर रा वैल्यू गुडा को मो से वेरिएबल रे देखि इन एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन. Array element can be accessed by specifying the name and subscript number of the array. हमें तो array variable गोटे लोकेशन में जदि सब वैल्यू हमें स्टोर करिवा त को जगह रे को वैल्यू को आनिवा पई तकर आइडेंटिफायर दरकार. तो सेति पे हमें कोन करले ना array रो गोटे इंडेक्स नंबर डिफाइन करी. Array ro index number, it is starting from 0. So if you notice here in this array index number which is starting from 0. Now jodi moro panchta array variable अछि तो last index position कोन हबो ना 5 - 1. array रो size जति के थिबो ता देरे हमें 1 माइनस करले हमें last index position पाइयो. जदि मो array रो size होची 5 माने पांचटा वैल्यू स्टोर करबी 5 रो एकी कले तार लास्ट इंडेक्स पोजीशन होती 4 कारण ये 0 रो स्टार्ट होती 0 1 2 3 4 हमर पांचटा एलिमेंट पई 0 रो स्टार्ट होला 0 1 2 3 4 पांचटा इंडेक्स पे रहू. एटी सिम रहला हमें पांचटा वैल्यू स्टोर करबा पे हेले एटी हमें 0 इंडेक्स नंबर देले 0 1 2 3 and 4. But when you store this value, it is of same data type. You can create the following types of array. One is one-dimensional array, another is multi-dimensional array. One-dimensional array means is a collection of elements with a single index value. Can have multiple columns but only one row. One-dimensional array कौन होइबो ना multiple column जेमति देखो एटा होची one-dimensional array. आर मल्टीपल कॉलम अछि 1 2 3 4 5 मल्टीपल कॉलम बट इट स्टोर इन ए सिंगल रो गोटिए रो रहिबो एटा कहजिबो सिंगल डायमेंशन array. In single dimension array element are stored in a single row but it is having a multiple column. The column which is starting from first index value is 0 0 1 2 3 4. It is called a single dimension. Then for defining a single dimension array, how you declare programmatically in a single dimension array? I can define the single dimension array in this way. For declaring array variable को declare करिया पई int a new keyword use कराबो new int यदि पांचटा एलिमेंट स्टोर करिया अछि 5. This is the one way. Another way is int eta ago bracket devi a equals to new int then 5. Out of eta gote way re then int a equals to new int. So at the time of declaration ने मो variable को initialization करि करि तो एठी मते साइज दबा दरकार 10 20 30 40 एठी मते साइज दबा दरकार एटा डायरेक्टली वैल्यू स्टोर हो बुझला.
तो ये वे रे आमे आरे डिफाइन कर दो int a equal to new int 5 एटा आगरे ब्रैकेट दे परिबा नले एटी दे परिबा तापर एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन रे आमे वैल्यू भी स्टोर कर होला आ ऊपर काली आउरी प्रोग्राम करिवा म तुमको काली भी आज तुमको फॉर लूप रो सब एग्जांपल ने क्वेश्चन गुडा सब दे देबी फर्स्ट ऑफ ऑल तुम निजे ट्राई करिवो जदि किसी प्रॉब्लम होला निजे बाहर करिवो मतलब ता सॉल्यूशन म आगोटे दिन पर करबो आरे ऊपर काली तू इन पड़िबा काली सेम टाइम 17 Thank you, sir. वेलकम